Hey guys, Assalamu alaikum. I am your host Jan Sarwar and you are watching Fields on Wheels. जी दोस्तों, तो आज हम मौजूद हैं 17th एनुअल विंटेज एंड क्लासिक कार शो में। तो आज आपको कुछ एग्जॉटिक कार्स दिखाते हैं। तो कार लवर्स के लिए ये इवेंट बिल्कुल हेवन की तरह है। तो इस हेवन का थोड़ा सा वॉक अराउंड आपको कराते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी गाड़ियाँ मौजूद हैं। It's a legendary track car, one of the greatest track legends in the world. और आज तक Lotus 7 की सीरीज होती है। तो KTM was the company that recreated the Lotus 7. It started calling itself the KTM 7, Yuvraj 7. ज़बरदस्त। So this is basically a kit car. It came to Pakistan in a box, and then it was assembled in Pakistan. This belongs to Faizan Sayyed. He's done a great job. We brought in a new engine for it from the UK, and he put new engine into it. ज़बरदस्त। So this car is absolutely fantastic. मतलब बहुत नीट एंड क्लीन लुक में है। I think Faizan done. अच्छा सर, सेम कार आपके पास भी इसी शेप में मौजूद है, तो थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करें। That's an Atom. That's a Mechatronic. That's a single-seater race car. That's a model car. There are only 35 of those ever built. So all these cars were originally. This is the big daddy of all of them. This is the grandfather. कि मैंने बेंटली की राइड ली थी सर के साथ बैठ के, और उससे अच्छी राइड मैंने अभी तक किसी गाड़ी की नहीं ली। मैंने इतने शोज़ किए हैं, लेकिन उस गाड़ी की जो अंदर लेदर की स्मेल थी, उस गाड़ी की जो ड्राइव थी, 160 170 हम टच करे थे और पता ही नहीं चल रहा था। So this is a 1948 Ford F1, and this is the original predecessor of the F-150 truck. This is also a legendary truck. And the beauty about it is it's been restored in Pakistan. If you see this little picture here, they will tell you exactly किस स्टेट में आई थी और ये स्टेट में आई थी। अब ये देर आप सबसे बॉडी गली हुई थी और ये US से एक्सपोर्ट हुई थी ढांचे के पास। और आप अगर इसको आज देखें तो दिस इज अ परफेक्ट रेस्टोरेशन, एंड दिस जेंटलमैन हैज वीडियोस ऑन YouTube and on Kafi to detail how he's restored it, and there is a labor of love. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दिस इज द ओल्डर वर्जन ऑफ रैप्टर्स, यू नो, कि वो प्रॉपर एक फील उन्होंने That is correct. So this is the grandfather of the Raptors. So this is a 1948 Ford F1, and it went on to become the F-150 and the Raptors, and as you know them today. So you're absolutely right. 1948. This belonged to Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah himself. थोड़ा सा इसके पास आते हैं, मैंने इसको टच करना है। वो कहते हैं ना एक जिसपे हमारे This is a part of Pakistan's history. जो हम कहते हैं हमारे क्लब का लोगो है, our heritage on wheels. This is truly our heritage on wheels. Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah owned this car. This car was used by him till his death. इस गाड़ी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. It is in the Rolls-Royce manual. The Rolls-Royce book about the great cars that they've made talks about this car. And this was actually made by, remember, connected to Jawaharlal Nehru. And when this was gifted to him, this had cowhide interior. और उनकी cowhide जो है बड़ा सीक्रेट होता है, तो वो cowhide यूज़ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म को फिर वो गाड़ी जो है, वो गाड़ी कायद-ए-आज़म को अंग्रेज़ों नहीं, कायद-ए-आज़म को दी और जवाहरलाल नेहरू की दूसरी गाड़ी बनवाई। दो गाड़ियाँ गिफ्ट हुई थी पाकिस्तान के हेड को और इंडिया के हेड को, and they were given by Rolls-Royce. This car now belongs to Arif Ashwani. This is Pakistan's heritage. This is one of pure our legendary Pakistan cars. This is a car that has a great value because of its heritage. This is a pair of Rolls-Royces owned by Wahid Abdul Wahid. Wahid Bhai is probably the greatest collector of cars in Pakistan. The collection that he has is second to none. I mean, he's it when it comes to car collections in Pakistan. बहुत आउटस्टैंडिंग कलेक्शन। तीनों गाड़ियाँ वाहिद भाई की हैं। मैं किसी गाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा, बट ये रोल्स रॉयस का एक पेयर है। दिस इज अ क्लाउड, दिस इज 1965, This is basically Cloud 3. Am I not wrong? Yeah, you're right. This is a Cloud 3, and Wahid bhai is taking a lot of pleasure in restoring this car and doing well. There are a lot of cars here that I will tell you that originally belonged to Abdul Wahid, and they are now with other people who. This car was made as a Ferrari killer. This was the first car made by the Japanese that really put Ferraris to shame and put major supercars to shame. And this is now a very sought after, very desirable car because ये बहुत कम बनी थी
और लोग बहुत ही कहते थे यार limited होंडा क्या बनाएगा और उस वक्त होंडा वर्ल्ड चैम्पियन था, F1 चैम्पियन था। तो 2 गाड़ियाँ होंडा ने बनाई अपनी F1 टेक्नोलॉजी का शोकेस। एक होंडा NSX थी और दूसरी होंडा बीट थी इन द अर्ली 90s. Yes, These two exactly. mid-engine cars, one was a convertible, one was a small toy of 660cc, and this was the top end and that was the bottom end. And सर they के were पास known भी as- एक होंडा बीट है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये NSX जो है ये this is a legend, and this as far as I know this is the only NSX in Pakistan, and this is probably one of the greatest sports cars ever made by the Japanese, and this redefined Japanese motor cars and racing cars as we know it. So these two Rolls and this NSX belongs to Mr. Abdul Wahid. It's part of his great collection. सर कहते हैं कि इस गाड़ी ने जो कहते हैं ना सुपरा के जो सुपरा लवर्स हैं उनको कन्विंस कर लिया था कि वो इस तरफ आ जाए, क्योंकि ये गाड़ी इतनी खूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त बनाई है। Actually ये गाड़ी इतनी तेज़ थी कि सुपरा वाला सोच ही सकता था। This was Ferrari territory. Exactly. The NSX put Ferraris to shame. And I was in the US जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और वहाँ पे इतना मैसिव इसका क्रेज़ आया था, Craze आया। बहुत मैसिव इसकी वेटिंग लिस्ट थी और ये बहुत ही लिमिटेड उन्होंने बनाई है और लोग पागल हो गए थे कि इसको इनको किसी तरीके से ये मिल जाए बस। और आज तो NSX और नहीं मिलती नहीं जब है। नई थी नहीं मिलती थी तो आज क्या मिलेगी मिलेगी। NSX। तो ये गाड़ी दिस इज़ अ लेजेंडरी कार। द होंडा NSX इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स कार्स एवर मेड बाय जापान। अब सर चलते हैं आगे की तरफ। आप अगर ये देखेंगे दिस इज अ पेयर ऑफ ओल्ड बर्ड्स एंड दिस इज अ 170D एंड दैट्स अ 220D। अच्छा सर मुझे एक छोटी सी चीज़ पूछनी है, आप इतनी सारी गाड़ियों की नॉलेज अपने दिमाग में कैसे रख लेते हैं? क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ 280 170 मैं, लेकिन निकल जाता है सब दिमाग से। अपने अपने शौक की बात है और मैंने आपको बताया ना वाले साहब बात कर रहे थे हम बड़े हुए मेरे DNA में कर so if it has wheels I do it. I'm the only one in Pakistan who does off-road racing, on-road racing, karting, autocrossing, classic car rallies, old cars. हर तरीके का जहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स है वहाँ पे सर आपको मिलेंगे। सर बीटल्स के बारे में क्या कहेंगे? बीटल्स बहुत ही तो ये Volkswagen क्लब का कॉर्नर है। Volkswagen Owners Club BWOCP is a Volkswagen Owners Club of Pakistan and they've got these 4 Beetles parked here. और ये द थिंग है, अगर आप ये देखेंगे पीली रंग की ये खड़ी हुई है, ये बनियार साहब की है। सादिक बनियार गॉट दिस एब्सोल्यूट गॉर्जियस ब्यूटी, इट्स कॉल्ड द थिंग। और ये जमाल जमाल साहब की मैंने आपको इंटीरियर बताई थी और आगे उनकी इटाई के बारे में बताऊंगा। ये भी कन्वर्टेबल मेरे ख्याल से 67 की बीच में है। एंड दिस द ओरिजिनल वन आई गेस। दिस इज द ओरिजिनल। बहुत कम है, ये बहुत रेयर है। इसकी छत नहीं काटी। ये दिस इज अ कॉर्वेट, दिस इज 67 कॉर्वेट कन्वर्टेबल, so people also call it the Stingray and it is absolutely beautiful. It's one of my all-time favorites. Zabardast And this car गाड़ी है। belongs to Salem Ayub. Salem's been very kind. He sent the car and he's got a great collection of Mercs. वैसे तो he's a Merc man, best of nothing कहता है, लेकिन he owns a Corvette for a change. But this car is worth owning. I think it's an absolute gorgeous beauty. इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। मुश्किल नहीं होगा ये कहना कि ये this is one of, for me, one of the more desirable cars here in this show today. इसके साथ ये एक 280C खड़ी है। This is the last 280C in this shape. ये सबकी फेवरेट है, मेरी भी बहुत फेवरेट गाड़ी है ये। इन फ्यूचर अगर मुझे मेरी जेब ने ज़्यादा दी तो मैं सर से ले लूँगा, ऐसी ले लूँगा। Inshallah, and why not? Why not? He's always welcome. And this belongs to Shoaib Qureshi. This pair of this Camaro and the Mercedes belong to Shoaib Qureshi. These two belong to Asim Arshad. These are the pair of 108 and a 109. Very beautiful Mercs. Ferrari belongs to Farrokh Usmani, and I introduced this Pontiac 400 Firebird also. And this is a legendary car. When this car was made, it was the widest car ever made, production car ever made, and a sports car in the world at that time. And it's a Testarossa. It was also the fastest car in the world. And this car used to do 180 miles per hour. And this got a V12 engine, and it's absolutely incredible. So me and my younger brother, we used to love the Ferrari and the Lamborghini Countach. So I was a Countach fan, and my brother was a Testarossa fan. So this is a Lorenzo, this is a SL500. This used to belong to the Prime Minister of Pakistan, Mian Nawaz Sharif at that time. This car was gifted by the Emir of Qatar to the Prime Minister, and it's actually become a joke because obviously the Prime Minister got into trouble for all the gifts from the Qataris. But this car was used for the launch of the motorway, and this is a limited edition, one of one ever made. So this is a very sought after car, and I'm very fortunate to have this car because it's an absolute beauty. I've travelled across Pakistan. I've driven Karachi to Khyber, Karachi to Peshawar, Karachi to Gwadar. This car's done it all, and it's an absolute fabulous, beautiful car. So as I mentioned earlier, these 4 cars belong to Faraz. I introduced him with the 400 Firebird. Some of you have seen it on the muscle car show that Brian did recently. And this Aston Martin DB6 is probably one of the most desirable cars in Pakistan. And there are few cars more desirable, known as the Bond Aston, and this was the original Bond Aston that was used. And you see it, it has a rag top,
And I was mentioning Abdul Wahid साहब की कुछ गाड़ियाँ हैं that have come to life, and he's brought this car back to life. अच्छा फराज भाई से एक मेरा सवाल है, आप कभी चलाते हुए जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आती है? बिल्कुल आती है। तो फराज हमारे जेम्स बॉन्ड है एस्टन मार्टिन के बगैर. He doesn't need, look at his shades and look at his haircut. सर का एक स्टाइल है जो मैंने बहुत नोट किया सर, हैंड फ्रीज लगा के फिर किसी को नहीं देखते, सिर्फ स्टीयरिंग पे हाथ होता है सर का. एंड सी ही ड्राइव्स वेरी वेल. So this MG belongs to him as well, and Beauty Thunderbird belongs to him. He's got a fabulous 911. You guys met Amir Dada just now. Amir Dada's 911 now belongs to Faraz, and that's one of the most beautiful Porsches in Pakistan. So Faraz is a supreme collector. He's got a collection which is far excellence. This pair of beauties, these three actually, all three, belong to Shiraz Qureshi. Shiraz Qureshi is a fellow racer. He's become a fantastic motoring enthusiast. He races cars, he races horses, he races bikes, he races. So that's the least I can say. He's the owner of उसका नाम ही कुछ दिनों बाद रेस पड़ जाएगा क्योंकि वो हर चीज़ Absolutely. And as we speak, I can see his race truck parked behind. If you turn around, the Stiller's being parked behind. His daughter just won race in Chalestan. She came बहुत second. बढ़िया अचीवमेंट है सर. This is Mr. Kareem Chhabra. Kareem is the backbone of BCCP. And as you see this entire lineup from this corner to that Rolls from the corner, and I'll tell you more about that Rolls. It's the most legendary car in Pakistan. For me, it's the finest car in Pakistan. And more important than that, for Kareem is my brother Kareem. He's the finest guy that we can possibly have. BCCP today is what it is because we have Kareem on our side. And Kareem is whatever we do. Kareem is an integral part. This show wouldn't have happened. Kareem is standing here with us. सर जैसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप कुछ BCCP के बारे में मेरे बोले. ख्याल में रजन पर कितना अच्छा बोल सकता है, वो बहुत अच्छा बोल रहा है. वो तो है, एंजॉय वो तो है. रजन पर कैरी ऑन. So this is Kareem. These are Kareem's beauties, starting with his Mini. This is probably the best Mini, and this is the Mustang that set the benchmark. So this was the first Mustang that was restored to this level. You see one part next to it which belongs to Adnan Hussain, but Kareem's car was the car that set the benchmark. And I'll take you and show you a few other Mustangs, but they've all replicated this car. This car was the final restoration. And you can see this MG. So me and Kareem have taken this MG and gone to every corner of Pakistan. This car has been to Punjab, and I have videos of Kareem in -5 with the top down, stowing and using the wiper with his hands outside for the windscreen. And this car has gone to Punjab, this car has gone to Gwadar, this car has gone to every corner of अच्छा Pakistan. ये भी बड़ा सवाल है कि पंजाब गई कैसे, तो वो अगर सर हमें खुद बता दें थोड़ा सा. ये गाड़ी पंजाब जो है ना वो क्योंकि कार गाड़ी है, इसमें कार्बोरेटर्स होते हैं, ऊपर जो है ऑक्सीजन कम होती है, तो जब एज वी क्लाइंब तो इस गाड़ी को लीन फ्यूल जो है कम करना पड़ता था ताकि फ्यूल प्रॉपर्ली बर्न हो सके. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम 16,000 फीट तक पहुँच गए थे. और वहाँ पे इसकी कुछ खूबसूरत पिक्चर्स हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा सर से लेके, कि बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है और टॉप डाउन करके तो उसको बहुत मज़ा आता है एंजॉय. मेरी कलेक्शन में ड्राइव करने के लिहाज से और जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, दिस इज माय फेवरेट. Like I said, जितना हमने इस गाड़ी को एंजॉय किया है और इसके साथ इसको और ये वाइट गाड़ी असल को बहुत ये दोनों गाड़ियाँ हमने जो है और मेरी हमारे सब में पूरा पाकिस्तान जो है घुमाया. And now the Mustang, now Kareem takes the Mustang also a lot. So these are BCCP signature cars. So both these cars are Adnan Hussain's. The fabulous MPTV, the 1942 has been restored to complete perfection. And if Kareem is your guide, then आपकी गाड़ी जो है ना वो less than perfect नहीं हो सकती. Kareem and Oji do the best job of restoring and building cars that anybody can do in Pakistan. Oji Shah is a friend from Lahore and he just got married, so we wish him the best. But he and Kareem restore cars better than anyone else. And these two beauties belong to Kareem. This is the car which is a legend. We talk about icons and we talk about legends. As far as I'm concerned, this is the most iconic car in Pakistan. This is the legendary car. Quaid Azam Mohammad Ali Jinnah used this car on 14th August 1947 for the flag hoisting ceremony of Pakistan as a new state. This belonged to the Nawab of Bahawalpur, and this is a 1926 or a 1925 Rolls-Royce Silver Ghost. This was the last of the Ghosts made. So the Ghosts were discontinued after this, and dear friend of ours, Nadir Bakshi, who's a racing legend, Nadir has the first Ghost that was made after this car, so we often pass them together. So this car has done only 9,000 miles. So in 95 years, this car has done 9,000 miles. And if you look at the level of restoration and the level of और ये इंटरनेशनली भी ये गाड़ी जीत चुकी है. So both these cars are the only two cars that have represented Pakistan
at an international concours event in Kuwait. And on their first outing, on their debut outing, this car secured first position and the Hapovel secured third position. So these are basically Pakistan's cars. Hamari heritage on wheels. Both these cars belong to Kareem, and Kareem has done great justice to them, and they've become legends in Pakistan. So as you see that, this is a Bentley Turbo R, and this is an MG Midget 1975. थोड़ी देर पहले मैं आपसे इस गाड़ी के बारे में बात कर रहा था कि इस गाड़ी की हमने राइड एंजॉय की थी और बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग राइड थी इसकी. 160 170 टच करे तो पता ही नहीं चल रहा था. तो ये शायद बेंटले का कमाल है. This is a Bentley Turbo R. It was the finest car made with 4 doors in the world at its time. The only car made better, as I mentioned earlier, was the Queen's Force. और ये 6800 सीसी टर्बो चार्ज गाड़ी है. तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि this car redefined Bentley. Bentley was a dying brand till they came out with the Turbo R. This was the first car, and the R stands for road holding. So this was a very fast car, and they put in a sports suspension. तो थोड़ी stiff हो गई. But ये और Rolls-Royce Silver Spirit were fairly similar, but this was twice the price of a Silver Spirit. For the simple reason that this was engineered with the turbos and with the suspension and with the road holding to make it what it was. मैंने रायन को इतना कहा था कि इस जगह गाड़ी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है. मैं कहता दरवाजा खोल के सिर्फ लेदर की जो खुशबू आती है ना, वही काफ़ी है. So इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो आप देखेंगे इसका बर्ड वुड और इसका जो है वो इंटीरियर और इसका लेदर और इसका कॉर्नली. ये इसके काउ शीप स्किन मैट्स है. अगर आप ये ब्लू मैट्स देखेंगे, दीज आर वेरी सॉट आफ्टर, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. बट इस गाड़ी की असल खूबसूरती है इसकी खुशबू. आप दरवाज़ा खोलते हो और आपको जो लेदर की खुशबू विफ जो आती है, दिस इज़ व्हाट रियली टर्न्स यू ऑन. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक. यू विल सी. Not only very unique, this is owned by a gentleman who bought it in the memory of his son, and this is owned by a member of ours. He passed away recently, and we've given this car prime spot in memory of him. और इनका बेटा था. I will ask him to say a few words about this car and his son. 94 BMW Cressida, one and only in Pakistan. called a bubble car. My son wanted to come to the show, but unfortunately he passed away on 2nd of February. So I bought it over here after 4 years. I don't know. My son. So today's show is a tribute to him. Today's show is a tribute to Ovi. And today's show is, we miss him and we wish he was here with us. And we are with the family and they're a member of our fraternity. And BCCP stands with them. Each one of us stands with them. And thank you. Captain Masroor साहब की गाड़ी है. This is a labor of love. He's restored this car. ये गाड़ी मोहम्मद अशरफ साहब ने पाकिस्तान में इंपोर्ट की थी. हमारे बड़े लेजेंडरी रेसर हैं. And Ashraf is a great guy. We all look up to him. He races. And Mansoor bhai is a great guy. He builds great cars. जो डॉक्टर खालिद रशीद असलम की मैंने आपको MG दिखाई थी कोने में जो रशी कार है. और ये मुझे जहाँ तक पता है कि दिस इज दी ओनली 2-seater Rolls Royce in Pakistan. Yeah, this has been worked on to some extent. It's not in its original form, but he's done a fantastic job with this car, and it's a real beauty. And these three belong to Liaquat Malik. And like I mentioned, Liaquat Malik is one of the pillars of BCCP, and we travel a lot together. There's a 450 SLC. It's a very rare Regal 107. It's a larger engine SLC. This is a Buick Riviera. So this is also known as the boat tail. प्रोग्राम भी किया था. This is also known as the boat tail, and we brought both these cars. करीम छापड़ा की मस्टैंग थी और ये बोट टेल थी जो हमने मसल कार शो किया था. तो अगर आप इसकी टेल देखेंगे तो इसकी टेल जो है वो बोट की तरह आती है. So it's known as the Riviera boat tail. So this car I used to see as a kid growing up. This car belonged to Saeed Hai Saab. He was Pakistan's tennis champion. He was one of Pakistan's tennis legends. He was, if I remember correctly, one of the first people to represent Pakistan at the Wimbledon. तो मैं पाकिस्तान का जूनियर चैंपियन था उस वक्त. तो वो ये गाड़ी लेके आते थे और हम एज यंग बॉयज भी टू सी Saeed Hai Saab pull up and park and get off this car. So these cars, like I said, are a heritage of these. And this is Liaquat Malik's Mustang. This Mustang has also travelled across Pakistan. It's the only Mustang I think that has travelled the kind of road. It went from Karachi to Khyber to Swat and all the way back to Karachi 2-3 months ago. ये भी बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में रिस्टोर हुई है. And mentioned Farooq Usmani's cars earlier to you, and this is a replica car of Farooq Usmani. It's a Bugatti Type 35, 1927. I've driven this car. Me and Kareem took this car for a drive one night from Farooq साहब. और क्या चलती है, इतने मज़े की गाड़ी है कि और देखने में भी बड़ी खूबसूरत है. तो हमने जो है वो फैज़ान सैयद की KTM 7 और इसको आमने सामने खड़ा किया. These are the cars that you walk into as you enter our show. So Farooq has the Testarossa and Farooq has this and the Firebird here. But he's got a beautiful Camaro and he's got a Raptor and he's got a fantastic collection.
type of cars. ये एक Fiat 1248 belongs to Shahzada Asim, and Asim's rebuilding his Lancia. He was showing us pictures of that. These cars are absolutely beautiful. अपने वक्त की तो Italian Mastro थे, लेकिन आज भी आप इनको चलाएं. मैं आमिर दादा की बात कर रहा था. He's got a beautiful Alfa Romeo. Alfas हो गई, Fiats हो गई, Lancias हो गई. They handle like nothing else and sound like nothing else even today. This is a 1952 TR2 Triumph TR2. ये सबसे पुरानी गाड़ी थी जो हमारी रैली पे गई. Drove with us from Karachi to Khyber. And आगा अहमद पूरी is the proud माशाल्लाह से owner. कंप्लीट किया रैली और बहुत ज़बरदस्त ड्राइव है इस गाड़ी की भी. और मैं इसकी वीडियोस भी देख रहा था, सर ने भी मेरे साथ शेयर करी कि कराची से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं उनके साथ ये मज़े से चल रही थी. ओवरऑल सारी गाड़ियों का तकरीबन रिव्यू दिया और सर ने बताया कि उनकी क्या हिस्ट्री थी. अच्छा सर, एक सवाल मुझे ये बताएं कि विंटेज और क्लासिक कार्स को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं? There are very few vintage cars here. हमारी ज़्यादातर क्लासिक्स हैं. विंटेज जो है करीम की गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी, अदनान हुसैन की गाड़ियाँ थी, इमाद की कुछ गाड़ियाँ हैं. तो जनरली स्पीकिंग these are loose terms, but classic cars are 60s onwards, 50s onwards are classics. There are modern classics, there are original classics, there are some cars which are born classics. Exactly. So it's a loosely worded term. हम जो अपनी डेफिनेशन में यूज़ करते हैं, जो 50s से और उनसे पहले की गाड़ियाँ हैं वो विंटेजेस हैं, और जो 60s और ऊपर की गाड़ियाँ हैं वो क्लासिक्स हैं.